Okay, we have already gone through the various aspects, that is theory of demand, nature of demand, law of demand, determinants of demand, demand function. All these things have been completed along with elasticity of demand. These many things are there in the second unit, and in the notes almost everything is being provided to all of you. Am I with you? Yes, sir. Yes, sir. मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंबाइन पढ़ाऊं, लेकिन at times it happens like, as the medium of instruction is English, I continue in English. ठीक है? So you people need to cope up with me regarding the aspects. So is the slide visible to all of you? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So concept of demand, that has already been over. What is demand? That is already been completed. Factors determining demand, types of demand, law of demand, demand schedule, demand curve, assumptions, exceptions to law of demand, factors affecting increase and decrease in demand, change. These things have already been completed. You might not have completed this. What are the different types of demand? Are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. So hereby I'm just showing you the different types of demand. So firstly, we are having joint demand. What actually joint demand is? When a product jointly demanded jointly with some other or main product. Are you getting me? Please pay attention to everything what I am saying. If a product is being asked or it is being demanded along with another product, that means main product is already there, but one another product is also being demanded along with it. That is what is called as joint demand. Say, I have given you example of this over here. I have shown it. Along with mobile, you always ask for a SIM. You never purchase a SIM prior to purchasing of mobile. Do you? Hello? No, sir, we don't. No, sir. No, sir. मतलब क्या मोबाइल खरीदने से पहले सिम खरीद लेते हैं आप लोग, या No, पहले sir. मोबाइल खरीदा जाता है फिर सिम खरीदा जाता है? सर पहले मोबाइल पे सिम. ठीक है, so you don't purchase a SIM. So along with mobile, you always demand for a SIM. Same. Similarly, we are having another product along with this. Say, when you go for purchasing a bat, you always ask for a ball along with it. Yes, sir. Yes, sir. Pardon? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मैं थोड़ी सा आवाज आप लोग की बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे भी सुनाई दे. I have slowed down the volume or minimize the volume. Okay, the basic thing is, when you go for a bat or when you go for purchasing a bat, you always ask for a ball. So the ball is jointly demanded along with the bat. Similarly, over here, along with the mobile phone, you ask for a SIM. So a product, that means the SIM is demanded along with mobile phone, and this ball is being demanded along with this bat. That is what is called as joint demand. That means when two or more goods are required at the same time, there is a main product along with that somewhat other product which would be complementary to it, that is added. It is then the demand for both the product is called as joint demand. Is it clear? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Okay. Next, Yes, second one sir. is direct and derived demand. What is direct and derived demand? The demand for the final product or the ultimate objectives is called direct demand. Whereas there is a derived demand for one commodity or service when it is wanted as the result of the demand for another commodity or service, it is called as direct and derived demand. या हम दूसरे शब्दों में कहें, the goods which is consumed for direct satisfaction
or demand of ultimate object is called direct demand. Suppose you want to buy a car, you ask for it, it would be direct demand. ठीक है? Or otherwise, say demand of sugar for household purposes, that is basically called as direct demand. Whereas on the other hand, demand for different kinds of goods which are not consumed for direct satisfaction, rather these things go to make a final product, which is also called indirect demand or derived demand. Say you purchase a car for your own satisfaction to run it, you demand it, that would be a direct demand. And in order to run the car, you need petrol. ठीक है? Without it, you cannot run. Or in order to run the car, petrol is genuinely required, or some aspect of power is required. So that aspect of power which you are asking for, that is called as derived. मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next one is composite demand. Composite demand is little bit different. By this we mean the demand for a commodity which can be put to many uses. मतलब कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम कई तरह के यूजेस में ले सकते हैं. ठीक है? So the demand for a commodity which can be put to many uses, and the composite demand composes of demand for each of the several uses, such as suppose we use coal for household purpose. So coal is being used for what purpose in the households? Hello? Sir, yes, sir. Yes, हाँ, sir. जो कोयला हम लोग डिमांड करते हैं वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है हाउस होल्ड में? सर सिगड़ी जलाने के लिए। सिगड़ी जलाने के लिए, फॉर कुकिंग फूड, isn't it? Yes, sir. Similarly, the same coal is being used for various other purposes, say for running engines, for generating power. ठीक है? So it can be used for various industrial purposes. So in this case, the demand for coal arises for many uses, and therefore the demand for coal will be called composite demand. As such, I have shown over here the aspect of steel. Steel can be used for household purpose as well as for industrial purpose or for business purposes. So when a particular product serves different purposes and fulfill the need of different customers at the same time, and it is being demanded, such type of demand is generally being called as composite demand. ठीक है? मतलब Yes, एक ही sir. प्रोडक्ट को कई यूजर्स के द्वारा अलग अलग पर्पजेस के लिए मांगा जाता है ताकि उनकी जरूरत पूरी हो सके. That is what is called as composite demand. Then we are having competitive demand. When two commodities are fairly close substitutes for one another, and increase in the quantity demanded of one of them will reduce the demand for other. That means there is always a competition. Say Coke and Pepsi, these are two soft drinks which we generally use. We don't talk about right now prices. We simply talk about the products. Okay. So if the demand for Coke increases, the demand for Pepsi might decrease, but it won't decrease to such a little extent that there won't be any competition. But we see that there is always a competition, that at one point of time Coke is being demanded more, or on the other hand Pepsi is demanded more. But the demand for one commodity, if it increases, it decreases the demand for other, or it will reduce the demand of other product a little, not much. Okay. As such, I have given you an example over here that BIT is more demanded than any other college. This I am not saying, this is simply an example.
ठीक है. So do you think that BIT is more in demand, so therefore the importance of other colleges that is going to decline? Yes, sir. Yes, sir. No, that is not going to decline, but their efficiency, effectiveness, and everything, or the aspect of demand, that would also remains the same, because okay, the higher number earners, the higher scorers, they would naturally join BIT, and everybody would wish to. But the people who get less number of marks, for them, at least they would be also demanding the same college. But suppose they don't get the opportunity, what they would do? मेरी So बात they नहीं. will go with other colleges. Yes, so demand for other colleges, that is not going to decline like anything, but in comparison to BIT, the demand for other colleges, that is going to be reduced, but a little. Is that clear? So that is what is called as competitive demand. Next aspect, elasticity of demand, we have already completed it. Have we completed advertisement elasticity of demand? No, sir. Okay. So advertisement elasticity of demand is the proportionate change in the quantity demanded due to a proportionate change in the advertisement expenditure or the cost of advertisement. Okay. That means rate of change in the quantity demanded. Rate of change, जैसे rate of change बोलते हैं, it is basically the percentage change in the quantity demanded due to percentage change in the advertisement. That means the more the advertisement would be, the more the quantity would be demanded. मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया जाता है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ती है. वो तो सही है, लेकिन किस रेशियो में, किस परसेंटेज में, किस प्रोपोर्शन में बढ़ती है. So advertisement elasticity of demand tells us about that thing, that what is the proportionate change in the quantity demanded that has resulted due to a change in the advertisement expenditure or the cost of advertisement. ठीक है? So there is a positive relationship between the advertisement expenditure to that of quantity being demanded. The more the advertisement would be, the more the quantity would be demanded for a particular product, and the lesser the advertisement would be, the lesser the product would be demanded. So it could be denoted in the other way around also. Are you getting me? Yes, sir. Thereafter, we have already gone through all these things. जो चीजें हो गई उसको नहीं करूंगा. This is the point formula or point mathematical formula which is being shown over here. Delta Q X advertisement elasticity of demand is equals to delta QX upon QX upon delta A upon A equals to delta QX upon QX divided by delta A upon A, which can be denoted like this and thereafter like this, which I have already shown in previous classes. I think so you people remember it. झरना इतना लेट ज्वाइन कर रही है. So we are moving ahead of it. So 1 minute. Huh.
Yes, sir, it's done. Okay. Are the things visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just one. See, in the advertisement elasticity of demand, we are having three types of aspects. That advertisement elasticity of demand is equals to 1, less than 1, and greater than 1. We generally evident it that when there is an change in the advertisement expenditure, say it is 1000, it is 2000, it is 3000. So the more you would be advertising for a particular product, or the more the expenditure is being incurred on advertisement, the rate of change would the rate of change in the quantity demanded, that also becomes equal. Okay, so in that case, advertisement elasticity of demand would be equals to 1. But sometimes what happens, you are having a variety of other products also, which are close competitors of yours, and they also do the same type of expenditure on advertisement. So in such a scenario, the advertisement expenditure would be much, but the quantity demanded would change in the same ratio as the advertisement is being done. Are you getting me? That means the expenditure on advertisement being done by all the companies, say Coke and Pepsi, they are being advertised simultaneously. Are you getting me? Yes, Yes, sir. sir. Okay. When the cricket matches goes on, you might have seen that at one point of time, Coke is being advertised, whereas on the other hand, Pepsi is being advertised. They are being advertised one after another, and the rate of show or rate of advertisement, you can say, rate means I'm saying frequency, कितने बार दिखाया जाता है, जितना ज्यादा एक चीज का एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उस टाइम किसी एक प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो दोनों बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है, चाहे वो कोक की हो चाहे पेप्सी की हो, वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितना कि एडवर्टीजमेंट किया जाता है. That increases, no doubt, but the rate of change in quantity demanded is lesser than the rate of advertisement expenditure. Therefore, यहाँ देखो रेट ऑफ चेंज यहाँ कितना है, यहाँ 1000 से मान लो 3000 हुआ एक्सपेंडिचर, लेकिन यहाँ पर जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 1000 से हो सकता है सिर्फ 1500 ही हो. So the rate of change of quantity demand is lesser. So advertisement elasticity of demand is less than 1. Apart from it, there are certain instances, there are certain events when you do less of advertisement, but the quantity demanded is very high. Are you getting me? Yes, Yes, ध्यान sir. देना, सभी लोग ध्यान देना बेटा, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत वही होती है जैसे हम लोग उसमें बोर्ड में कराते हैं, डिट्टो वैसा नहीं हो पाता है जिस हिसाब से हम चाहते हैं. हाँ, यहाँ देखो, the rate of advertisement expenditure, it is lesser, ठीक है, and the quantity demanded is more, or there would be an increment in the quantity being demanded. That means the rate of change in quantity demanded, that is more in comparison to the advertisement expenditure. ठीक है. When such type of things happen, do you find any event whereby advertisement expenditure or the expenditure on advertisement is lesser, but the quantity demanded goes up
like anything. That means the rate of change in quantity demanded is much more than the rate of change in the advertisement expenditure. Any idea? So when we use word of mouth for advertising, so the quantity demand increases. Like we don't need to advertise See, word more. of mouth doesn't require a single penny. Hmm. Hereby, we are talking about expenditure on advertisement. You might knew that during any festive seasons, advertisements are being done. Say during the time of Dhanteras and Diwali, the advertisements being made, that is also very frequent, but the advertisement is not done with too much, but the quantity demanded for products that increases like anything. Is it true? Yes, sir. ठीक है, तो in such a scenario the advertisement elasticity of demand is more than one. Why it is more than one? The quantity demanded is more, the rate of change in the quantity demanded is more than the rate of change in the advertisement expenditure. Due to that, the advertisement expenditure on demand, advertisement expenditure of demand is greater than one. ठीक है, मैंने तीनों कंडीशंस बताई हैं. द फर्स्ट कंडीशन इज वेरी नॉर्मल. द सेकंड कंडीशन takes place when we are having competitive goods or we are having goods which are close substitutes, and the third instance is during the festive seasons. Clear hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what are the factors which influence the advertisement elasticity of demand? There are 4 points which are being shown to all of you. First is stage of product development. That of at which stage the product is being developed, or at what stage the product is in the way of development. Are you getting me what I mean to say? How many stages are there in a product life cycle? एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं? No idea? No, sir. Okay. We are having introduction, growth, maturity, saturation, decline, obsolescence. मार्केटिंग में पढ़े होंगे आप लोग? No, sir. Do you people remember? No, sir. नहीं. एक्चुअली मेरा इसमें पेन वर्क नहीं कर रहा. अगर पेन वर्क कर जाता तो मजा आ जाता. Normally होता क्या है? I would just try to check it out for all of you. I will just show it to you. Kindly see to it. ठीक है? Hereby I am just making a graph for all of you. This is
x-axis, this is y-axis. This is the time period. ठीक है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. Shown. Yes, sir. Say at the hereby we would write down the stage of product development. I'm just doing it with the help of a mouse. Stage of product development. Say at the very initial when the product is being introduced, it starts from zero, this point. ठीक है? तो ये introduction stage हो गया. This is say introduction stage. After some time, it rises like anything that happens to take place in growth stage. Thereafter, it reaches the maturity, then saturation, then this is decline, and thereby you'd face a situation of obsolescence. Say introduction, this is growth, over here this is maturity, this is saturation. Hereby we see an aspect of decline, and over here this is obsolescence. What happens when the product is in the introduction stage? Huge some amount of advertisement is being done. जब इंट्रोडक्शन स्टेज में होता है, जब किसी एक नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है? किया जाता है, sir. किया जाता है, so that the product should be made known to, or the people should be aware of that a new product is coming up. So at that point of time, huge some amount of advertisement expenditure is being done, but the quantity being demanded, that is lesser. मेरी बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. इसी को मैं दूसरे ग्राफ से शो करता हूं. At the introduction stage, this is say advertisement expenditure, say 1000. ठीक, it is being done, and the quantity demanded, say at the very initial it is 10 units. ठीक, the advertisement expenditure increases up to 2000 and then up to 3000. ठीक है, but you might see in the introduction stage the quantity being demanded that might increase up to 12, up to 15. That means the rate of change, this to this, the rate of change over here, that is lesser in comparison to the amount of advertisement expenditure. देख रहे हैं यहां एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा किया जा रहा है, और उसके मुकाबले में ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज है यहां पर ये कम है. दिस हैपेंस इन व्हिच स्टेज? Introductory stage. इंट्रोडक्शन. क्लियर? ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने किया है ताकि आप लोगों को दिख जाए. Then say the second stage is this growth. That means कुछ टाइम पार होने के बाद हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ा सा कम कर देते हैं, एज द पीपल आर अवेयर ऑफ, क्योंकि पीपल लोगों को प्रोडक्ट की जानकारी हो जाती है तो परचेजिंग थोड़ा बढ़ जाता है. दैट मीन्स द गुड्स आर बीइंग सोल्ड मोर. ठीक है, इन द ग्रोथ स्टेज. सो व्हाट हैपेंस इन द ग्रोथ स्टेज? This is the diagram. This is the amount of expenditure being done, and this is the quantity demanded. ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर
थोड़ा सा आप कम कर देते हैं, बट द क्वांटिटी डिमांडेड दैट इंक्रीजेस। अगेन थोड़ा सा वो करते हैं, यू फाइंड मोर ऑफ क्वांटिटी बीइंग डिमांडेड, सो यू वुड फाइंड सच टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज ऑफ डिमांड। ये इन पॉइंट्स पे टच करना चाहिए था। Getting me? Yes, sir. So Yes, sir. the rate of change in the expenditure that is quite lesser, and the quantity demanded, or the rate of change in the quantity demanded, that is quite higher, or that is quite greater. So in such a case, advertisement elasticity of demand is greater than 1. This happens in the growth stage. Sometimes it is also equals to 1. That means the rate of change is equal in the growth stage. And in the maturity stage, this stage, what happens? हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर बिल्कुल मिनिमम होता है और क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिमांड की जाती है। द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। क्लियर? लेकिन एक टाइम आता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज saturation, whereby we have all this stages of saturation. So in this stage what happens, we have already reached our peak. That means हम लोग जितने लोगों को कैटर कर सकते थे हमने सबको कैटर कर दिया, so thereby we are having the saturation stage. For example, suppose in the classroom the very first student came, second student came, and the wholesome number of students to whom I could teach that cannot exceed 60. So that is the stage whereby I reach saturation. Similarly, the total number of customers who are asking for or demanding for certain products that have reached its maximum, that is what is called as saturation stage. And thereby, in the saturation stage, we see that there is a downfall which is generally being seen in the quantity being demanded. जैसे saturation stage है, इसमें आपका जो quantity demanded था वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? You do more of advertisement, but the quantity demanded doesn't increases as the level of advertisement which is being shown over here. Getting me? Yes, मेरी sir. बात नहीं समझ पाए। सैचुरेशन स्टेज में नए नए कंपटीटर्स मार्केट में एंटर करना शुरू करते हैं, उन लोग नए फीचर्स के साथ आना शुरू करते हैं, और आपके जितने कस्टमर्स थे उन लोगों ने अपने प्रोडक्ट, मतलब आपके जितने कस्टमर्स थे उन लोगों की जितनी डिमांड थी आप उनको पूरा ऑलरेडी फुलफिल कर चुके हैं। ठीक है, अब उससे ज्यादा कस्टमर्स आने की कोई उम्मीद नहीं है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सैचुरेशन स्टेज। और एक टाइम ऐसा भी आ जाता है कि जब नए कंपटीटर्स एंटर करते हैं, व्हेन दे एंटर इनटू द मार्केट विद न्यू प्रोडक्ट्स विद मोर नंबर ऑफ फीचर्स, इन दैट केस द लाइकिंग फॉर योर प्रोडक्ट दैट वुड डिक्लाइन, और यू बिकेम bored of using the same product and you would long for new products with new features. ठीक है? So at this stage you do more of advertisement. That means expenditure is more. It comes like this. The first one, this one, आपका एडवर्टाइजमेंट बढ़ता चला जाता है, but the quantity demanded that doesn't increases much. Rather, at the decline stage, that is, this is decline stage. In this, you advertise more, but the product is being sold lesser and lesser and lesser. ठीक है? हाँ, this aspect of product life cycle can be enhanced, या इसको और थोड़ा सा elongate किया जा सकता है थोड़ा आगे तक, when you do more of R&D over here at this stage. ठीक है, तब ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट यू वुड फेस ए सिचुएशन ऑफ डाउनफॉल दैट वुड बी लाइक दिस। अगेन कुछ समय तक R&D के कारण आपका प्रोडक्ट फिर थोड़ा सा चलेगा, फिर वो डाउनफॉल फेस करेगा। अगर फिर थोड़ा सा और R&D किया तो ये और थोड़ा बढ़ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो दीज
this is one of the factor that at which stage of product life cycle the product is. So at the initial, advertising is being done more, then we do a little bit lesser amount of advertisement. At maturity stage, we do the least amount of advertisement. At saturation stage, we do normal type of advertisement, and due to which the elasticity of demand that changes. Similarly, talking about degree of competition. Acha, these things are never being given in the books, whatsoever I have explained. ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक? एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्टेक्स्ट में या बाकी के कॉन्टेक्स्ट में जो बता रहा हूं. The next is degree of competition. The more the degree of competition is, or the more the severity of competition is, the more you have to advertise. So the rate of expenditure would always be at the higher end to that of the rate of change in the quantity demanded. ठीक है? The third aspect is effects of advertisement in terms of time. आप कितने बार एडवर्टाइज करते हैं एक प्रोडक्ट को? जितना ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी को डिमांड किया जाता है, और जितना कम एडवर्टाइज करेंगे उतना कम डिमांड किया जाएगा. सो एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो फ्रीक्वेंसी है एडवर्टाइजमेंट की वो भी इफेक्ट करती है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बाय द राइवल फर्म्स. आपके जो कंपटीटर्स हैं वो कितना ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं. जितना ज्यादा वो आपसे एडवर्टाइज करेंगे, मतलब आपसे जितना ज्यादा वो एडवर्टाइज करेंगे उतना ज्यादा उनका प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में रहेगा, क्योंकि आप कम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो लोगों तक कम टाइम तक वो पहुंच रहा है एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन. जबकि दूसरा अगर ज्यादा कर रहा है तो उसका इंफॉर्मेशन ज्यादा पहुंच रहा है, ज्यादा टाइम तक पहुंच रहा है. तो लोग ऐसे प्रोडक्ट को चाहते हैं जो ज्यादा टाइम एडवर्टाइज किया गया, क्योंकि वो उनको याद रहता है. तो ऐसे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट करती है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Sir. Yes, sir. Yes, sir. मूविंग नाउ टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो टोटल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है. ठीक है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ कमोडिटी. व्हाट टाइप ऑफ कमोडिटी इट इज. Is it fast moving consumer goods? Is it slow moving consumer goods? Is it durable goods? Or it is non-moving goods? So naturally, if it is fast moving consumer goods, elasticity of demand would be greater than 1. If it is slow moving consumer goods, it may happen that the elasticity of demand would be equals to 1. In the third instance, if the product is totally non-moving goods, in that case, elasticity of demand is 0. Infinite कभी नहीं होगा इसमें. Next is existence of substitutes. कितने substitutes available हैं, कितने competitors market में अपना रोल प्ले कर रहे हैं. How many number of substitutes are there? The more the number of substitutes are, the lesser the elasticity of demand would be. The lesser the number of substitutes are, the more the elasticity of demand would be. Getting me? yes, sir. देखो, प्रोडक्ट अगर ज्यादा होंगे तो आपके कस्टमर्स बढ़ जाएंगे. मतलब जब सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा होंगे तो कस्टमर्स बढ़ जाते हैं. Are you getting me? तो ऐसे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाता है. और जब सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, सेलर्स कम होते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है. देन नंबर ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी. जो कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो या डिमांड कर रहे हो, उसके कितना टाइप्स का यूज है, किस किस प्रयोग में लाया जा सकता है. जितना ज्यादा कमोडिटी का
यूज होगा अलग अलग चीजों में, उतना ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जितना कम यूज होगा, नंबर ऑफ यूजर्स जितने कम होंगे, उतना ही कमोडिटी का डिमांड कम होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। किसी एक प्रोडक्ट के यूसेज को आप कितना ज्यादा पोस्टपोन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में व्हाइट वॉश होना है, आप पोस्टपोन कर सकते हो? Yes, sir. यस। मतलब मान लो दिवाली सीजन आ रहा है, हर आदमी चाहता है कि अपने घर में व्हाइट वॉश कराए, रंग रोगन करवाए, लेकिन मान लो वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या आप बिना रंग रोगन के दिवाली मना सकते हैं? नहीं मना सकते। सर दूसरे वर्कर खोजेंगे। कोशिश, मान लो नहीं मिलते हैं तब सर बिल्कुल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। दैट मीन्स हमारा वो डिसीजन पोस्टपोन किया जा सकता है। जो हम लोग लेबर को डिमांड कर रहे हैं या प्रोडक्ट के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा किसी प्रोडक्ट के परचेज डिसीजन को या डिमांड के डिसीजन को हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, उतना ही उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल Yes, सी sir. चीज है। दूसरे शब्दों में, अगर दवाइयों की बात की जाए तो घर में कोई बीमार है, तो क्या दवाइयों को परचेज पोस्टपोन कर सकते हो? No, नो sir. नो सर। नहीं कर सकते। दूसरी चीज, जितने भी प्राइस पे दवाई अवेलेबल है, आप उसको लेने की कोशिश करेंगे, यस सर। क्योंकि जिंदगी बचाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बढ़ जाता है। जितना कम पोस्टपोन किया जाएगा उसका डिमांड होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतना बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा पोस्टपोन किया जा सकता है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी कम हो जाएगी। सिमिलरली टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर्स, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, बता चुका हूं आप लोगों को एकदम शुरू में ही। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट जितना ज्यादा ड्यूरेबल होगा, उसकी इलास्टिसिटी उतनी कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ड्यूरेबल है तो लंबे समय तक चलेगा, जब तक वो खराब नहीं होगा आप दूसरे के लिए जाएंगे ही नहीं। ठीक है, Yes, sir. इज इट क्लियर? यस सर। हाँ। द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आप अपने इनकम का कितना हिस्सा खर्च कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं, मतलब टोटल इनकम का खर्च कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा किसी प्रोडक्ट की डिमांड की इलास्टिसिटी बढ़ सकती है। और जितना आप कम खर्च करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही इलास्टिसिटी कम होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? मैं Yes, बहुत sir. सीधे शब्दों में मैंने कहा है, अगर इनकम का, ये एक्चुअली इनकम के साथ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, प्रपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आपका इनकम का कितना हिस्सा आप खर्च करने की कोशिश कर सकते हैं। जितना ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे या जितना ज्यादा प्रपोर्शन यूज करेंगे अपने इनकम का, उतना प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी, और जितना कम खर्चा करेंगे उतना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होता चल जाएगा। ठीक है, यस सर। ये उसका डिटेल है, चाहे तो आप लोग स्नैपशॉट ले सकते हैं अपने लिए। Now, moving down to demand forecasting. What actually demand forecasting is? सर सर हाँ, सर वो स्नैपशॉट लेना था। अच्छा ये ले लो। सर जो एडवर्टीजमेंट हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हाँ, वो नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन जनरल नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट ज्यादा से ज्यादा करते जा रहे हो और डिमांड कम से कम होती जा रही हो, ऐसा जनरली होता नहीं है। until and unless the product becomes obsolete. Obsolete नहीं मतलब सर, आउटडेटेड जैसे कोई हो सकती है, एडवर्टीजमेंट अगर किसी, प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है तो। नहीं जैसे कोई एडवर्टीजमेंट किसी किसी पर्टिकुलर
मतलब कम्युनिटी को हर्ट कर रहा है, लाइक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, तो हाँ। उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे तो इफेक्ट आएगा ना। लेकिन ऐसा एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी करेगा ही क्यों, पहली चीज। दूसरी चीज, हम एडवर्टीजमेंट बनाते ही इस प्रकार से कि वो किसी को हर्ट ना करे, कोशिश ये की जाती है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। कभी भी कोई एडवर्टीजमेंट ऐसा देखा है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट करता हो, आज तक? सर बहुत सारे होते हैं बट उनको हटा देते हैं। हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे इफेक्ट पड़ सकता है, तो इमीडिएटली उसको चेंज कर दिया जाता है। आई विल जस्ट गेट यू वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस। जैसा कि आपने कहा, जैसे कि अभी ये कैडबरीज का एक एडवर्टीजमेंट आया था 5 स्टार का। कुछ ना करके भी बहुत कुछ हो सकता है। एक बुड्ढी लेडी बैठी होती है नीचे, और वो उसकी छड़ी दूर गिरी रहती है, तो एक लड़के से बोलती है कि बेटा मेरा छड़ी उठा दोगे क्या? डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. यस सर। सबको वो एडवर्टीजमेंट याद है। लेकिन हमारे हिंदू कम्युनिटी में बड़ों की बातें ना सुनना अच्छी मानी जाती है क्या? No, sir. तो बड़ों की बातें सुननी चाहिए। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, दैट एडवर्टीजमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट। And since last many weeks, I think you people might not have seen that advertisement much. Am I correct? उसकी जगह उन लोगों ने हेलो चलो वाला एडवर्टीजमेंट यूज कर लिया है। Yes, sir. डू यू रिमेम्बर? सो दैट इज द थिंग। जब ऐसा कोई कंपनी करती तो उनको पता रहता है कि उन लोग क्या कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई बताता ही है। लेकिन उनके हिसाब से उन लोग जो एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो किसी कम्युनिटी विशेष की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, और जहां ऐसा रहता है उन लोग उन एडवर्टीजमेंट्स को हटा देते हैं। इसीलिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बैन हो जाते हैं। ठीक है? ओके सर। ठीक, ओके। शैल वी प्रोसीड? Demand forecasting. So whenever we say demand forecasting, it is the amalgam or combination of two words, demand and forecasting. ठीक, जब हम डिमांड की बात करते हैं, that is what the demand for a commodity is, the price of it that a consumer will be ready to purchase it from the market at a given point of time. And whenever we say forecasting, it is basically a prediction. What? It is basically a prediction or estimation of future situation under given conditions. That is what is forecasting. That means you try to predict the future, and future is totally uncertain. You don't know what is going to happen in the very next moment. And hereby we are going to predict the aspect of demand, what is called as, which is generally being termed as demand forecasting. Getting me? Hello. Yes, sir. यस सर। So talking about demand forecasting, generally what happens? The increase in demand will result in increase in sales, which constitutes the primary source of revenue for business. And on the other hand, increase in demand will also result in increase in production of output. So you may very well identify the importance of elasticity of demand, sorry, importance of forecasting that happens to take place with respect to demand. हम डिमांड को फोकस क्यों करते हैं? Why it is necessary? Is it at all necessary? And what purpose does it serve? Because we understand that if we are predicting that the demand is going to increase, you have to increase the output. And if you predict that the demand is going to decrease, in that case, you have to decrease the output as well as the other resources, because otherwise you are going to sustain losses. So from that point of view, we need to forecast the demand. So forecasting can be broadly classified into two categories: passive forecast and active forecast. Two types of forecasts are there.
So those two types of forecasting is generally being done in different situations. So hereby I have raised the question why we need to forecast demand. Firstly, in order to assess the total quantity being demanded by the people, that means we want to identify the total amount of goods which would be demanded by the people. Secondly, to plan the production accordingly as per the demand. And thirdly, to plan for all the resources or all the inputs which are necessary from the point of view of production. Say manpower, raw material, capital. We have to decide about all these inputs. So if there would be an increase in demand, we need to work out on all these aspects. Or suppose there would be a decrease in the demand for a particular commodity, what we need to do? We need to decide it accordingly. So dependent on that, we always insist that we should be able to predict the demand for the upcoming future. So different methods are being used up and different types of forecasting is being done. So in the next lecture, I'm going to talk about the aspect of active and passive forecasting as well as the different methods of forecasting. Would it be okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. You just do one thing. I'd be calling up your attendance. Kindly get me your attendance. One thing, when I call your name, give me your assertion in yes. Okay. Aarti. Oh, sorry. Ayushi. Yes, sir. Abhinav. Present, sir. Aditi. Present, sir. Aditya. Present, sir. Akanksha. Anamika. Present, sir. अनिकेत Present, sir. अनिकेत की पहली अटेंडेंस है मेरे क्लास में अंजलि Present, sir. अनमोल अनुष्का Present, sir. आशी भाविका भेखराम Present, sir. चेतना Present, sir. दीपिका Present, sir. दीपशिखा Present, sir. देशना Present, sir. धवल Present, sir. दीक्षा Present, sir. दिव्या Present, sir. गणपत Yes, sir. गणपत की तीसरी क्लास है गुंटी मानसी गुरविंदर हिमांशु Present, झरना sir. हिमांशु है Yes, sir. झरना अविनाश Yes, sir. विशाल Yes, sir. ख्याति Present, sir. कोमल Present, sir. कृष्णप्रिया मिताली Yes, sir. मधु Present, sir. महिमा Present, sir. वेगांत Present, sir. नम्रता Present, sir. Present, sir. नेहा निरेश Present, sir. पूजा प्रज्ञा Present, sir. प्रियंका
रचना, रुखसार, Present, sir. कौन? रचना, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Rachna. Yes, sir. Rachna. Hello. ओके, Present, रुखसार, sir. रुखसार, सना, संजलि, Present, sir. शिखा, शिखा, श्रीवी, Present, sir. स्नेहा, सौम्या, Present, sir. सृष्टि, Present, sir. पलक, तनीषा, Present, sir. तेजस, Present, sir. तुषार, Present, sir. विजेता, Present, sir. यश, Yes, sir. अपूर्वा, Present, sir. आदिल, सूरज, सिद्धार्थ। Present, sir. ठीक, थैंक यू एवरीवन, Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम। Thank you, sir. सर सूरज प्रेजेंट है ना सर? सूरज, राम प्रेजेंट है. हेलो, हाँ सर प्रेजेंट ना? सूरज प्रेजेंट है और सिद्धार्थ, सर और पूजा राम भी. सर वो एब्सेंट है. अच्छा सिद्धार्थ एब्सेंट है और पूजा राम प्रेजेंट है। चलो ठीक है, थैंक यू। काइंडली जॉइन द अदर क्लास क्विकली ऑफ अभिषेक सर। Yes, sir. ओके।